morning, dear children. Welcome back to my EVS explanatory video. Today we are going to finish lesson 5, Things Around Us. But before I finish off with the chapter, I would like to revise what we had done in this chapter. In the beginning, we had discussed about natural things and human-made things. Then we had discussed about living things and non-living things. After that, we had discussed about the characteristics of living things. What were the characteristics of living things which we had done? First characteristics was living things grow. All living things grow, but non-living things do not grow. Second characteristics was living things need food and water. Children, all living things need food and water to stay alive, whereas non-living things do not need food and water. Third was living things feel and react. Children, all living things can feel and react. They can feel through various organs and they also react to the surroundings. Fourth, living things breathe, whereas non-living things do not breathe. Last two characteristics which I am going to explain are living things move and the last one is living things reproduce. Come, let's read. Living things move. Living things move. Animals move from place to place in search of food and shelter or to run away from their enemies. Children, why do animals and humans move? They move in search of food, in search of water, in search of shelter, or they move to run away from their enemies. Means हम क्यों हिलते हैं, हम क्यों मूव करते हैं? Why all living things move? हम इधर से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. Living things move कर सकते हैं except plant. Children, except plant, all living things can move. Animals, birds, human beings, we can all move. Insects can fly. We can all move. But there is one plant which does plants, there is one living thing, that is the plant. They do not move. But yes, they do show some movement. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हिलते डुलते हैं, वो भी थोड़ा बहुत हिलते हैं, मूव करते हैं. Later I'll tell you about the plants which move, which make movement. Different animals move in different ways. Humans, lions, cows, etc. walk with leg. Children, human beings, lions, cows, all the animals, they walk with their legs. Human beings have 2 legs and animals have 4. 2 in the front and 2 at the back, with the help of which they can move. हम ह्यूमन बींग्स हम जो इंसान फिर जानवर जो है वो हम लोग कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स. हमारे पैरों से हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं. इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फ्लाई विथ विंग्स. इंसेक्ट्स लाइक कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं, जब बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, देन बर्ड्स, दे ऑल हैव विंग्स. दे कैन फ्लाई with the help of their wings, means they can move with the help of their wings. Fishes swim with fins and tail. How do fishes move? They swim with their fins, with the help of their fins and tail. Plants do not move from one place to another. They are fixed to the ground. As I said, children, except plant, all living things move. Only plants do not move because they are fixed to the ground. Plants को हम लोग, जैसे कि हम लोग प्लांट्स को मिट्टी के अंदर सो करते हैं. मिट्टी के अंदर हम लोग, वो प्लांट्स जो है वो मिट्टी में फिक्स होता है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह हिल डुल नहीं पाता है. सो प्लांट्स आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव. सम प्लांट्स शो अ लिटिल मूवमेंट. लेकिन हाँ, कुछ प्लांट्स हैं जो थोड़ा बहुत हिलते हैं, चल के नहीं जा सकते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट लेते हैं. वो कौन से प्लांट्स हैं? The touch me not plant closes its leaf when we touch it. ये बात मैंने पहले भी कही थी. Children, whenever we touch a plant, touch me not. एक प्लांट है जिसका नाम है touch me not. हम जब भी उस प्लांट को
छूते हैं, उस प्लांट्स के लीव्स को छूते हैं, वो एकदम क्लोज हो जाती है, एकदम वो अपने लीव्स को क्लोज कर देते हैं. सो दिस टच मी नॉट प्लांट, this touch me not plant, whenever we touch the leaves of the plant, it closes its leaf. And the other plant which shows a little movement is the sunflower, always turns towards the sun. Lotus flower opens in the morning and closes at night. Children, if you see a sunflower always turns its face towards the sun. जिस तरफ सन होती है ना, सनफ्लावर अपना चेहरा, अपना जो फेस ऑफ द फ्लावर है वो उसके तरफ कर देता है. हमेशा सनफ्लावर जो होता है, इट ऑलवेज टर्न्स टूवर्ड्स द सन. जहाँ धूप होती है, जहाँ सन होता है, वो अपना जो चेहरा होता है, फ्लावर का जो चेहरा होता है, द फेस ऑफ द फ्लावर, दे टर्न टूवर्ड्स द सन, धूप की तरफ कर देता है. एंड लोटस चिल्ड्रन, लोटस, दिस इज अनदर फ्लावर विच शोज लिटिल मूवमेंट. दैट इज लोटस जो होता है मॉर्निंग में, वेन एवर द सन कम्स आउट, वो खिल जाता है. लोटस मॉर्निंग में खिलता है और जैसे रात होती है ना, वो बंद हो जाता है. सो दीज आर द 3 प्लांट्स, दिस टच मी नॉट, सनफ्लावर एंड लोटस. ये 3 प्लांट्स जो है थोड़ा सा मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते हैं, लाइक वी ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. ओके, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रन, लिविंग थिंग्स reproduce. All living things produce young ones of their own kind. This process is called reproduction. Insects, birds, and some other animals like snakes, crocodiles, and frogs lay eggs from which babies come out. Animals like dogs and cats give birth to young ones. Dogs have puppies, cats have kittens, and human beings have babies. Plants produce seeds. New plants grow from seeds or from other parts of the plants like stem, roots, or leaves. So living things reproduce. Children, reproduction is when a young one comes out from an adult living thing. That is called reproduction. I'll tell you what the process. All living things produce young ones of their own kind. इसका मतलब ये है children, हर living thing, all the living things, like whether it is human being or it is or animals or insects or plants, they all reproduce. इनको babies होती है. reproduce का मतलब होता है produce करना, babies होना. like human beings का क्या होता है, like your mama gives birth to a baby. okay, like a cat gives birth to a kitten. a dog gives birth to a puppy. ऐसे करके छोटे छोटे किटन्स, कैट्स को किटन्स होते हैं, डॉग्स को पपीज़ होते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स को बेबीज़ होते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, बेबीज़ होना. दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. like insects and birds, they don't have babies, they lay eggs and small babies come out from that egg after some times. like snakes, crocodiles, birds, they all lay eggs, and after some time the egg hatches and small babies come out from the egg. Insects, birds, animals, snakes, crocodiles, frogs, ये सब अंडा देते हैं. इनका अंडा निकलता है और उस अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं. ठीक है. एनिमल्स लाइक डॉग्स, जैसे मैंने कहा, एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स गिव बर्थ टू यंग वंस. डॉग्स को पपीज़ होते हैं, कैट्स को किटन्स होते हैं. ठीक है. एंड ह्यूमन बींग्स को छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं. लाइक दिस, ममा गिव्स बर्थ टू अ बेबी. नाउ कैसे प्लांट्स, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? प्लांट्स को कैसे बेबीज़ हो सकता है? प्लांट्स ना अंडा दे सकता है और ना उन्हें बेबीज़ हो सकती है. तो प्लांट्स की बेबीज़ कैसे होती है? प्लांट्स हैव सीड्स. सीड्स से छोटे से ऐसे जर्मिनेशन होता है. जर्मिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे. जर्मिनेशन हम लोग प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है. छोटे छोटे सीड्स होते हैं, जिन सीड्स को जब हम लोग मिट्टी में डालते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी देते हैं, धूप लगता है, तो छोटा सा प्लांट निकल आता है.
So a baby plant comes out. So plants produce through seeds. छोटे छोटे सीड्स होते हैं. छोटे सीड्स को मिट्टी में डालो, पानी डालो उसमें और धूप दिखाओ तो छोटा सा बेबी प्लांट आ जाता है. सिर्फ सीड से ही ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सिर्फ सीड से ही बेबी प्लांट्स आते हैं. कोई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स स्टेम से भी निकल आते हैं, रूट्स से तो आते ही हैं, एंड लीव्स से भी निकल आते हैं. सो कहने का ये मतलब है चिल्ड्रन, ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स, जो जितने सारे भी लिविंग थिंग्स हैं, दे रिप्रोड्यूस, उनको बेबीज़ होते हैं. वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स को बेबी नहीं होता है. आपके डॉल को बेबी नहीं हो सकती है. सो चिल्ड्रन, हियर वी फिनिश द चैप्टर. Can your doll or toy reproduce? No, living things cannot reproduce. So children, here today we have finished lesson 5. So आज हमने क्या पढ़ा children? Living things move, whereas non-living things cannot move. Non-living things को जब तक आप अपने हाथों से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते, अपने डॉल को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख देते हैं, आपका डॉल कभी मूव नहीं कर सकता है. एंड लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लाइक लिविंग थिंग्स, जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं सबको बेबीज़ होते हैं. दे रिप्रोड्यूस, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स को बेबीज़ नहीं होते. दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. सो चिल्ड्रन, we have finished lesson 5. Now I want all of you to read the chapter very nicely. This chapter will come for your PT3 examinations. So children, please read the chapter carefully, and if you have any doubt you can ask me in the online class. I shall clear all your doubts, and we shall also discuss the question and answers which I have given you in all the assignments. So children, please read the chapter and do all your assignments properly, because we are going to check your copies. Okay? So children, till we meet again in my next video with a new chapter. Bye bye and thank you. Stay safe children.